जो कल होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे मुझे बताओ उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस हुई ताकि मैं उसको फिर Alright, the last question of the homework you gave us, question number 1, the cricket one. 1 minute. All right, so is the screen visible there? Yes, sir. Okay. एक क्वेश्चन था ये वाला आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम ना हुआ हो if there's Well, any. I had a problem in this one. Okay. Not really a problem. I just didn't like quite know. I didn't know how to calculate or determine the thinking distance. Okay. And that's the only problem I had. I didn't have any other problem with that. That's that one. All right. So Like only part 1, 2, 3, and 4. But the C part I did it already. Only part that was not, okay. there was the B part. Determine the thinking distance. Now the question is saying that when a car driver sees an emergency ahead, he applies the brakes. During his reaction time, car travels at a steady speed. Steady speed means constant speed, right? So reaction time, the car travels at steady speed. So that means this is speed time graph. Speed time graph. This is the steady speed. This 1 second is the time when the car is traveling at a steady speed. Okay, if we need to find the area of a speed time graph, what will that tell us? What does the area of speed time graph tell us? Area under the graph. Speed time graph ka Abdullah, you might not know this. It Speed time Rectangular. speed time graph का अगर area निकालोगे तो that will give you distance. Distance, right? Distance. So this is the thinking time. Thinking time. So that means this is the thinking distance, right? Yes or no? Thinking distance. And covers a distance known as thinking distance, right? So this is the thinking distance. Then it says the braking distance is the distance traveled by the car after the brakes are applied. So at this point, at 1 second, the brakes are applied, and then the car stops at 5th second. Why does it stop at 5th seconds? How do I know? Because at 5th second, the speed is 0. At 5th second, the speed is 0. That means that this distance is what? What is this distance? Braking braking distance. Braking distance, because this is the time when the brakes were applied. So this is the braking distance. ठीक हो गया? अब आपसे वो कह रहा है speed time graph of the car. Driver sees the emergency at t is equals to 0. Total mass of the car is given to you as 800 kg. Now, determine the thinking distance. So it would be simply 1 second into 30 meters per second. So thinking distance is equals to area
That's equals to 1 into 30. That's equal to 30 meters, right? Yes or no? Anyone? Yes. Any problem? Yeah. No. Braking distance. That's area. Again, half 1 into 30. This is 1, and then this is 30. Yeah. Thinking distance बोला ना? This is the thinking time, right? Okay, उसके बाद आपने ये वाला करना है. This is the triangle. ठीक है? अब triangle इसका area कैसे निकालेंगे? Half into what is the base? 4. Where does the rectangle start from? At 1. Where does it end? At 5. So what is the base? Hmm. Into? Hmm. Height. Right? So that's 60 meters. All right. Understand? Then the deceleration. What graph is this? Speed time graph. Speed time graph, right? How is the how is the deceleration of a speed time graph found? From the gradient of the graph. From the gradient, right? So gradient would be what? Rise upon run. What is the rise? What is the rise? 30. What is the run? 4. What is the run of the rectangle? 4, right? So it would be rise upon run. That's 30 divided by 4. That's 7.5. What's the unit? Meter per second square. Yeah. Am I able to explain this? Yeah. All right. Yeah. The force provided by the brakes. So What do you force mean by rise upon run? rise is the Mm. total change on y-axis upon total change in x-axis. So it was this point, and then it reached there. When it reaches there, Vada, how much is the change in vertical height? From 30 to 0. So what is the change? It's simply 30. Oh, okay, got it. And what is the run? It means what's the change on x-axis? So it was at 1. It went to 5. So what is the change on x-axis? It's 4. So this is the run, and then this is the rise. Right? Okay, got it. Yeah. Okay, so force provided, force F is equals to ma. F is equals to ma. I know the mass. How much is it? 800. I know the acceleration, that's negative 7.5. So what would be the answer? We just calculated it up there. 6,000 It's newtons. 6,000 newtons. Newton. हानि समझ आया ऊपर वाले पार्ट में कैलकुलेट किया था 6000 newtons. All right. Using ideas about friction and deceleration, Steer explain how the braking distance is affected by using new tires rather than badly worn tires. So how braking distance is affected? If you use new tires, that means there will be more friction. New tires means more friction. More friction means you would cover less distance, less braking distance. Less braking distance means less stopping distance, right? So new tires means means more friction, which means less braking distance, hence less stopping distance.
ठीक है? Car skidding on wet road. So when car skids on wet road means less friction. Hmm? Wet road means less friction. Part 2. Wet road means less friction. Less friction. Less friction means you would go a longer distance to apply brakes to stop. Yeah. हाँ, तो जल्दी गाड़ी नहीं रुकेगी. So less friction means more You're cover stopping more distance break. Yeah. and right, more stopping distance. So stopping distance is directly dependent on braking distance. मैंने यहाँ less लिख लिया. My bad. Wet road means अच्छा less friction तो ठीक है. More stopping distance बोला है यहाँ पर. Less थोड़ी बोला है. यहाँ पर मैंने more बोला है. बात समझ आ रही है? ठीक है? ओके. उसके बाद कार कैरिंग हेवी लोड ऑफ पैसेंजर्स, मतलब मास ज्यादा है. ज्यादा मास है तो उसको स्टॉप करना आसान नहीं है. तो जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे फौरन नहीं रुकेगा, काफी आगे जाके रुकेगा. सेम एज टू. आप ऐसे नहीं लिखो, आप या सेम एज टू, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप पूरा लिखो. Same as 2. या But like, wasn't 2 about like less friction with like heavy load of passengers? Wouldn't that be like more friction? heavy loaded car means more friction, but here heavy load has one more effect. फ्रिक्शन वाली बात तो ठीक है, फ्रिक्शन तो बढ़ जाएगी, लेकिन there's another effect which we call inertia. If something is moving, it would love to move. If something is at rest, it would love to stay at rest until an external force is applied. So something is already moving with a heavy load. Now, when you try to stop it, it would be harder if the mass is heavy. Because the more the mass, the more the inertia. And here at this point, I would take the leverage to explain inertia. Because inertia is the property of a mass to resist the change. To resist the change. To resist that change may be change in state of rest or change in state of uniform motion. Change in state of rest or change in state of uniform motion. So अगर कोई चीज रेस्ट पे रहना चाहती है ना, it would love to stay at rest until and unless external force is applied. If something is moving with constant speed in a straight line, it would love to go like that until and unless an external force is applied. Inertia, I can explain it one more way. You must have observed this at home. जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, दादा दादी नानी, आप उनके मोबाइल के जरा वॉलपेपर चेंज करो, जिंदगी अजाब हो जाएगी, है ना? मोबाइल की थोड़ी सेटिंग चेंज करो. क्यों होता है ना, वो उन्होंने जो सेटिंग की है, इट्स देयर कंफर्ट जोन. वो चाहते हैं कि वो वैसी रहे, तो कोई चेंज ना करे. उनके सोने की जगह आप चेंज कर लो, उनकी थोड़ी सी रूम की सेटिंग आप चेंज कर लो, वो नाराज हो जाते हैं. उनका इनर्शिया बहुत ज्यादा है. दे डोंट वांट टू चेंज, दे डोंट वांट टू. सो इनर्शिया का मतलब है द टेंडेंसिटी नॉट टू चेंज. ये मैं फिजिक्स की डेफिनेशन नहीं बता रहा, ये मैं आम जरा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ. लेकिन फिजिक्स में इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. इनर्शिया जितना ज्यादा होगा ना, तो उतनी ज्यादा. सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज. इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज. ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, हाउ मेनी ऑफ अस आर फॉलोअर्स ऑफ इमरान खान? हाँ, I would say I am. ओके, I am. ऑलराइट. और बताओ. Yes, ओके, me too. गुड. सो चलो, मी टू. अब
मैं अगर बात करूं ना, हमारी कौम बड़ी ढीठ है, हमारी कौम का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, सही है। अब Yeah, होता क्या that's है, true. इमरान खान का एक स्लोगन था, तब्दीली, चेंज, बट वी डोंट वांट टू चेंज। वो तब्दील करते करते इस कोशिश में वो जेल चला गया, लेकिन हम भी वैसी की वैसे हैं, वही हैं। वी डोंट वांट टू चेंज, आवर इनर्शिया इज वेरी हाई, सो इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू चेंज। हम चेंज होने ही नहीं चाह रहे हैं, वो बेचारा हमें चेंज करने के चक्कर में जेल चला गया, राइट, अभी तक वही है। लेकिन वी डोंट वांट टू चेंज, हमारा इनर्शिया बहुत ज्यादा है। सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू चेंज, द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, टू रेजिस्ट चेंज। 22-23 इयर्स हो गए उसको चेंज करते करते, लेकिन हम अभी तक नहीं हुए। सो इनर्शिया आपके पास क्या करता है, चेंज को रेजिस्ट करता है। क्या करता है? हाँ, डू वी हैव लिंता, जैनब तो है, अब्दुल, ठीक है, लिंता नहीं है, ऑलराइट। ये बात क्लियर होगी बेटा, इनर्शिया की एग्जांपल इमरान खान वाली तो कभी नहीं भूलेगी तुम लोगों को, सही है, बात समझ आ गई। सो इनर्शिया इज Yeah. द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। आई होप दैट्स क्लियर। So सो द like what would yeah, heavy load like what should passengers, I write? the heavy load passengers would mean that the car has more mass. Inertia is directly dependent on mass. The more massive something, the more inertia it has. ठीक है, तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हैवी है एंड इट इज एट रेस्ट, तो आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी होगी, बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकि उसको रेस्ट से मोशन पर ला सको। और अगर कोई चीज मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से एंड यू वांट टू स्टॉप इट एंड इट्स वेरी हैवी, आपने अक्सर सुना होगा, ये जो 22 व्हीलर ट्रक्स होते हैं, देयर ब्रेक्स फेल मोस्ट ऑफन। हाँ, जो हैवी लोड कैरियज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके ब्रेक अक्सर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लोड बहुत ज्यादा होता है, उनका मास बहुत ज्यादा होता है। जब वो एक दफा स्पीड पकड़ते हैं, तो जब वो ब्रेक अप्लाई करता है ड्राइवर, वो इनर्शिया की वजह से उसको रोक नहीं पाता, ब्रेक टूट जाती है, गाड़ी आगे निकल जाती है, अक्सर आपने देखा होगा, होते हैं ना। तो इसलिए आपने हैवी ट्रेलर्स को हमेशा बहुत स्लो चलते देखा होगा, कभी आपने हैवी ट्रेलर को स्पीड अप होते हुए नहीं देखा होगा, बहुत स्लो चलते हैं, क्योंकि वो उनके ब्रेक फेल हो जाएंगे अगर वो ज्यादा स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि उनका मास इतना ज्यादा होता है। मास ज्यादा होगा तो मतलब उनका इनर्शिया ज्यादा होगा। एक दफा उन्होंने स्पीड पकड़ ली, दे वुड रेजिस्ट टू मच टू स्टॉप, आपके ब्रेक्स भी फेल हो जाएंगे। जो बड़े बड़े पत्थर लेकर जाते हैं ना माउंटेन से फैक्ट्रीज तक, मार्बल्स वगैरह बनाने के लिए, आपने अक्सर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मीम्स बनी हुई होती हैं, उसमें वो जो बड़ा पत्थर होता है वो आपका ट्रक से बाहर आया हुआ होता है, आगे जो ड्राइवर केबिन होता है उसको डैमेज कर चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसने स्पीड पकड़ी, रॉक बहुत हैवी था, सही है, रॉक हैवी था। अब रॉक ने स्पीड पकड़ी हुई थी, द रॉक वांटेड टू गो विद दैट स्पीड, पर ड्राइवर ने अचानक ब्रेक अप्लाई कर दी। तो जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दी, ये कंटेनर था, ये ड्राइवर का केबिन था, ठीक है। अब हुआ क्या, ये पत्थर जो यहाँ पर पड़ा था, इट वांटेड टू मूव, तो उसने क्या किया, उसने आपके पास इस दीवार को तोड़ते हुए आगे चला गया, ये ट्रक इधर पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि रॉक का इनर्शिया इतना ज्यादा था, मास इतना ज्यादा था, इट डिड नॉट वांटेड टू स्टॉप, ड्राइवर को उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैंने वैसे प्रैक्टिकल कराया है। आप स्केल रखो ग्लास के ऊपर, उसके ऊपर एक कॉइन रखो एंड देन हिट द स्केल, ठीक है, स्केल को हिट करो ताकि स्केल फ्लाई कर जाए ग्लास से, यू विल फाइंड द कॉइन विल फॉयल इनसाइड द ग्लास, ठीक है, कॉइन ग्लास के अंदर गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉइन है, व्हाट डज इट वांट, इट वांट टू स्टे देयर, इट वांट टू स्टे देयर, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, जो आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड होता है उस पर टिश्यू रखा होता है, टिश्यू बॉक्स रखा होता है ना, जब आप टर्न करते हो या अचानक आप ब्रेक लगाते हो, तो टिश्यू बॉक्स अपनी जगह से आगे हिल जाता है, ठीक है। आप अचानक ब्रेक लगाते हो तो टिश्यू बॉक्स आगे चला जाता है, और अगर आप टर्न करते हो तो टिश्यू बॉक्स साइड पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे थे, तब टिश्यू बॉक्स का इनर्शिया था,
अब भी है, उसने स्पीड पकड़ी थी, नाउ इट वांट टू स्टे देयर, इट वांट टू स्टे इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन आपने अचानक उसको रोकने की कोशिश कर दी तो वो स्लाइड कर जाएगा आगे। आप ब्रेक लगाते हो, आप खुद भी आगे स्लाइड कर जाते हो अक्सर। आपका अगर पिछले सीट पे बैठे हो तो ड्राइवर की सीट पे आपका सर लग जाता है, क्योंकि आपका इनर्शिया है, आपने स्पीड पकड़ी है, आपकी बॉडी चाह रही है आप मूव करते रहे। बात समझ आई? यस और नो? अब्दुल्ला, Yeah, I got it. Yes. चलो अब So do I पैसेंजर, write more mass, more inertia, so more force will be applied, so less braking distance? it's for how many marks? 2 marks. So it's saying state ideas about friction and deceleration. State and explain. Okay. So ये idea use करना है। अब अगर मैं बात करूँ ना, car driving heavy load of passengers. ठीक है, तो इसके लिए लिखो अब यहाँ पर वेट रोड का था, वेट रोड का मतलब लेस फ्रिक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज यहाँ लिख लो, लेस, इसकी फ्रिक्शन तो ज्यादा होगी पर जो इनर्शिया का इफेक्ट है वो फ्रिक्शन से भी ज्यादा होगा। हम्म, फ्रिक्शन तो रोकेगा इसको, फ्रिक्शन क्या करेगा बेटा, बहुत माइन्यूट सा पॉइंट समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये पॉइंट बल्कि मैं लिखवा देता हूँ, लिखो तुम लोग। हैवी लोड, हैवी लोड मीन्स more friction, more friction, more friction, which means less stopping distance. Less stopping distance. But the effect of inertia is more. So that means stopping distance would be more. ये दो बातें कॉन्ट्राडिक्ट होती हुई लग रही हैं, बट ये डिफरेंट है दोनों बातें। बात समझ आ रही है? Okay, I have another question. यस। So is like stopping distance and braking distance the same? Or could we just switch those words, or we'd have to use ओके, specific words a for little situation? difference, a little difference। हाँ बोलो। ऊपर वाले में लिखा है हैवी लोड मींस मोर फ्रिक्शन, ठीक है? पार्ट 2 की बात कर रही है ना? पार्ट 3 में लिखवाया हैवी लोड मींस, देखो, हैवी लोड मींस मोर फ्रिक्शन, हैवी लोड की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? विच मींस देयर वुड बी लेस स्टॉपिंग डिस्टेंस, फ्रिक्शन ज्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगी, है ना? बट इससे ज्यादा इफेक्ट किसका है? इनर्शिया का है। Inertia would want the body to move continuously, so stopping distance would be more. Now Vada is saying कि फर्क क्या है stopping distance में और braking distance में। अच्छा, stopping distance का फॉर्मूला है, लिख लें कहीं आप लोग, stopping distance is thinking plus braking, stopping distance is thinking distance plus braking distance। Thinking distance is the distance There you, are formulas for braking distance as well, or thinking, or no just no, but stopping. this is the one formula that relates all the three, right? So thinking distance is the distance covered while you think to apply the brakes. Hmm? Braking distance is the distance covered when you have placed your feet on the brake pedal until you stop. So yeah, but when you place your feet on the brake pedal and you stop, is that the only distance that you have covered?
No, you have covered some distance before that as well. That was the thinking distance. So these two distance together makes the total distance. That's the stopping distance. All right, Vada? All right. Also, is braking distance and all these distances, are these in my syllabus or No, I told you in the the last class, it's not in your syllabus. Okay? okay, It's there in okay. these other students' syllabus. So that's why. In fact, if you have my old notes, you must have seen I've crossed this for not for IGCSE. Yeah, yeah. All right. This is another question which you people must have done. A passenger aeroplane accelerates from rest. Along a runway, it accelerates at a uniform rate for 35 seconds. At this point, it reaches a speed of 84 and then takes off. Calculate the acceleration of the aeroplane along the runway. So it started from where? From rest. That means the starting speed was 0. The final speed was 84. The time was 35. What's the formula for acceleration? V minus U V upon minus T. U upon That's T. 84 minus 0, or simply 84 upon 35. That's equal to acceleration. 2.4 meter per. All right. Okay. Yeah. Horizontal forces act on the aeroplane as it accelerates along the runway. Draw arrows to show the direction and relative magnitude of these forces. So it's accelerating. So it means it has a forward engine thrust, which is larger than the backward air resistance, right? So thrust, engine thrust, ठीक है? अच्छा, thrust normally engine की force होती है, driving force होती है. Upthrust is the upward force due to water or air. And this is air resistance. Yeah, I also did And that. then, I wrote then thirst, driving force, and then air resistance force. yeah, and then it's weight downward. It's weight downward. But then Should we go there's all the arrows because it says two horizontal forces? that's a Those horizontal arrows can I forces. only Okay, do? fine. But I'm just telling you for some more explanation. Weight, then there would be lift force. Lift force. जो जहाज को ऊपर लेके जा रहा है. Right? जहाज को ऊपर लेके जा रहा है. Lift force. So it's not moving at a constant height, ना? Height constant नहीं है. Rise कर रही है height continuously. So इसका मतलब है आपका जो lift force है, it is greater than the weight. If it would have been equal to the weight, then the height would have not changed. ठीक है? I have a question. Hmm. For this, can we also use a lift force and as well as normal contact force? Contact force, no, because the contact force is the force between the ground and the tires that's pushing on it up. Now, no ground is in contact with the aeroplane. All right? Oh, I thought I was on our runway though. All right. All right. What you mean, na? What you mean is some other context, which would be Newton's third law. You mean to say contact force? Yes, there's a since it's moving up now, it's moving up, so it's pushing the air up, right? ऊपर जा रहा है, तो air को push करते हुए जा रहा है ना? The air pushes back on it. Oh. Those two forces will be equal. I'll just label them. This is the force of plane on air, right? And then this one is the force of air on plane. In Newton's third law, the forces are equal. These are the contact forces, Vada, which you might have been talking about. But they are just saying over here, what do we have to do? Horizontal forces that act on the aeroplane along the runway. Draw arrows to show the direction and the relative magnitude of these forces.
So in terms of contact forces, they are equal. But if I talk about the lift force and the weight, they are not equal because it's continuously rising up. Okay? Oh, okay. Got it. What causes the smaller of these two forces? अच्छा, अब इसमें से जो smaller force है, अब horizontal forces की वो बात कर रहे हैं, ठीक है? Which one is smaller, air resistance or engine thrust? Is it Air accelerating? resistance. It's accelerating, na? तो इसका मतलब है thrust is more. So the lesser one is what? Air resistance. So smaller force की वजह कौन है? The speed of the aeroplane. Aeroplane ने speed पकड़ी तो air resistance मिली है ना? Movement of the aeroplane. The air, or you would say the air rubbing with the aeroplane. ठीक है? What about friction? It's not friction. Friction is two solid surfaces rubbing together. Okay? I heard that the acceleration increasing is the cause. Acceleration of the plane is the cause. You can say that. ठीक है? What causes smaller of these two forces? Acceleration of the plane. That's right. Acceleration of the plane. Right? Understand? Okay. Figure 10.1 shows horizontal forces as a cyclist travels forwards. The cyclist produces the driving force that acts on the back wheel. In this section, you may ignore the frictional force acting on the front wheel. The bicycle accelerates until a constant speed is reached. Accelerating and then reaching a constant speed. Describe how the size of the air resistance changes during this time. Size of air resistance means value of air resistance, means magnitude It of air increases. resistance. So yes, as it's moving, it's reaching a constant speed. So air resistance must be increasing. Air resistance must be increasing. ठीक है? Compare the size of the two horizontal forces when the bicycle is accelerating. So the two horizontal forces, one is the driving force, the other one is the air resistance. How will these two compare when it's accelerating? जब वो accelerate कर रहा है Good. तो मतलब constant speed नहीं है तो driving force ज्यादा है शाबाश. So driving force is greater than air resistance. Size of air resistance changes during this time. भाई वो speed up कर रहा है until he reaches a maximum speed. उसके बाद उसकी speed मजीद नहीं बढ़ रही. उसके बाद उसकी speed constant हो गई. क्या हो गई? तो इसका मतलब क्या है? So इसका मतलब है isn't कांस्टेंट हो गई when तो this जो उसकी ड्राइविंग फोर्स थी एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते उसके बराबर आ गई, इंक्रीज हो गई. राइट? यस, बता. but when it reaches a constant speed or is at rest, aren't the two forces equal or balanced? They So are, they are, they so are aren't the sides gonna be equal? in A2. Yeah, A2. Okay, can you read the question again? Loud. Compare the size of the two horizontal forces when the bicycle is, oh, it's accelerating. Okay, never mind. All right. I hope you have the hard copy of the book in front of you. Yeah, I do. Tell me 1 minute जब रह जाए, ठीक है? Okay, so this meeting will end about in 1 minute ना? ठीक है, तो जब end हो जाए तो just rejoin. ठीक है? Okay, the total mass of the bicycle and the cyclist is Right. 75 kg. At one instant, the speed of the bicycle is 4 meters per second. The driving force is 30 newtons and the air resistance is 20 newtons. Calculate acceleration of the bicycle and the cyclist. Acceleration calculate करनी है. Total mass given है 75 kg है. So acceleration is F upon M ना? Yeah. All right, resistance 20 है. Resistance कितनी बेटे 20 है. Driving force कितनी दी हुई है? 30.
30. So 30 minus 20. हमेशा minus करते हैं ना, forward minus backward. The answer is 0.13 meter per, no, meter Is it per the second s- square. Is it the same for everyone? Yes. Okay. Yes. Okay, can you tell me what's the answer? 0.13 meter per second. 0.13 meter per second square. All right. Okay, that's the last one. Then you will have to rejoin. Some bicycles are made from low density materials. Why this is an advantage? Low density materials. Less mass hoga. Increase. Let's say, Less mass hoga na? So you would need less yeah, force to accelerate it. Hmm? ज़्यादा acceleration होगी.